Once again, a very good morning to all of you, my dear students. This is Rishikesh sir, and I am teaching you today the different features of the democracy. So, in our last class, in our introduction part, I had told you the meaning and definition of the democracy, and as I told you, the definition of democracy told that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. इसका मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी एक 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 इस तरह का सरकार होते हैं, एक ऐसा सरकार होता है जहां पर रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं. इफ द रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द people, then that kind of government, that types of government cannot be called as a democracy. But we saw the features of democracy told that democracy is a form of government where the rulers are elected by the people. Then as I told you in the last class, that this simple definition, through this simple definition we can say that any country is a democratic country or a undemocratic country or not a democratic country. So how can we know through details which country can be called as a democratic country? So to know about the details of democracy, we have to discuss about the various features of the democracy. So after that you will be able to understand that which country is a democratic country or democratic one and which one is a non-democratic country. So the first features of democracy, that is the major decision by elected leader. That means here we can say in every democracy all the decisions of the country must be taken by the elected leaders. If the decisions is not taken by the elected leaders or if the decisions is taken by any autocrats or monarch, that types of country cannot be called as a democracy. So if the decisions, if the law, if the rules and regulations, all the decisions, programs, policies, so all the decisions if taken by the elected leaders, that can be called as a democratic government. Take an example of Pakistan, so through which we can easily understand which country can be called as a democratic government or democracy, or which country cannot be called as a democratic country. So take an examples of Pakistan. What happened in Pakistan? Now in Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. So who is this General Pervez Musharraf? General Pervez Musharraf was the head of the Pakistan military. Okay, Pakistan military organization. So in the year 1999, General Pervez Musharraf as the head of the Pakistan military led a military coup in पाकिस्तान. तो उन्होंने क्या करते हैं कि 1999 में जो कि एक मिलिट्री कॉप करते हैं, मतलब मिलिट्री पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं खुद को पाकिस्तान का लीडर बनाने के लिए हेड बनाने के लिए. सो क्या करते हैं वो मिलिट्री पावर का यूज करके? ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. That means before 1999 October, there was a elected government or democratically elected government was ruled over the country. And after when General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999, he overthrew the democratically elected government in पाकिस्तान. तो पहले जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, मतलब जो रूलर्स इलेक्टेड थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को तोड़ दिया. ओवरथ्रो मतलब क्या होता है? उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को तोड़ दिया और खुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव का हेड डिक्लेयर कर दिया. एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव्स आर दोज पीपल हु आर एग्जीक्यूट द डिफरेंट प्लान्स, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो उन्होंने गवर्नमेंट की चीफ एग्जीक्यूटिव खुद को डिक्लेयर कर दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने. ओके. Later he changed his designation to president and in 2002
held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. So what do you mean by referendum? Referendum means one kind of law, one type of law. Okay, emergency law. सो 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, जो कि एक इमरजेंसी लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंडम ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान. तो पहले उनको चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता था, अभी उन्होंने क्या किया, उस चीफ एग्जीक्यूटिव को अपना डेजिग्नेशन को चेंज करके प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान उन्होंने डिक्लेयर किया. एंड ऑल्सो थ्रू दिस रेफरेंडम he extended his power for 5 years. तो उन्होंने अपने पावर को 1919 में उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे, कहाँ का, पाकिस्तान का. तो 2002 में उन्होंने ये जो रेफरेंडम लाया, लॉ लाया, उस लॉ ने क्या किया, उनको 5 साल और ज़्यादा पावर दे दिया. क्योंकि कोई भी एक रूलर का एक लिमिटेड पावर होता है, तुम लोगों को पता होगा. MPs, MLAs or every MP, MLAs are elected for a certain period of time in almost all countries. Not all, but almost all countries, the MLAs and MPs and executives are elected for a term of 5 years. So that's why उन्होंने क्या किया कि extended his power for 5 years through this referendum. It was said that the referendum was based on malpractices and fraud. So the peoples of Pakistan believed that this referendum was based on malpractices and fraud. That means the referendum was not passed through the proper constitutional process. रेफरेंडम को इशू करने का कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था इस रेफरेंडम को पास करने के लिए. तो उसी वजह से ये कहा जाता है दैट इट वाज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. In August 2002, after that in August 2002, the Constitution of Pakistan was amended by the General Pervez Musharraf. General Pervez Musharraf in August 2002 amended the Pakistan Constitution. Amendment का मतलब क्या होता है, उन्होंने कुछ चेंजेस किया, उन्होंने कुछ परिवर्तन किया. किसमें, उनका जो संविधान था, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उस संविधान में उन्होंने कुछ चेंजेस लाया, कुछ परिवर्तन लाया. क्या चेंजेस लाया? अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट नाउ कैन डिसमिस द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज. According to this constitutional amendment, the president have the power to dismiss the national and state assemblies. National assemblies, that means the parliament, and state assemblies means that different state legislative assemblies. So right now the president, that means the General Pervez Musharraf, have the power to dismiss the national assembly like parliament and other state assemblies, legislative assemblies when required. तो उनके हाथों में अभी पावर चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने खुद बदलकर खुद को पावर दे दिया कि वो जब चाहेंगे पार्लियामेंट को भी तोड़ देंगे, और जब चाहेंगे जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको भी वो तोड़ सकते हैं. ओके, डिसमिस कर सकते हैं. सेकेंड, और क्या उन्होंने अमेंडमेंट लाया, that cabinet is supervised a national security council which is dominated by military officers. Now the cabinet ministers, as you know, in every parliament, in every government there are some cabinet ministers. तो अभी क्या हुआ, the cabinet minister will be supervised by the national security council, and the national security council is fully dominated by the army officers. And we know that General Pervez Musharraf was the head of the military. So that's why now, in a wrong way, in a wrong manner, they try to supervise the cabinet's power, and they try to mostly reduce the powers of the कैबिनेट. तो उन्होंने क्या किया, जो कि कैबिनेट को पावर को भी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि कैबिनेट जो भी करेगी वो उनके सारे काम को, कैबिनेट की सारे काम को जो कि मिलिट्री ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे, और अकेला कैबिनेट किसी भी तरह का जो कि डिसीजन सभी नहीं ले पाएगा. थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जनरल परवेज मुशर्रफ रिड्यूस द पावर्स ऑफ द कैबिनेट. सो यहाँ पर देखो, आफ्टर दिस अमेंडमेंट,
Elections were held to the National and Provincial Assembly after this amendment. Okay, मतलब जो 2002 अगस्त में जो amendment constitutional amendment परवेज मुशर्रफ ने किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, elections were held to the National and Provincial Assemblies after this amendment. नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली मतलब पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन हुआ 2002 में, एंड डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किया गया. इन पाकिस्तान elected representatives have some power, but the final power rested with military officers and General Pervez Musharraf himself. As we know that Pakistan is presently not in present situation, but at that time, that means during 2002, at that situation, the Pakistan was under the autocratic rules of the General Pervez Musharraf. सो अभी क्या हुआ, द इन पाकिस्तान द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम पावर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाथों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे हैव सम पावर, बट they don't have the power to take the final decisions in the parliament or in the state legislative assembly. The elected representatives not have the power to take any final decision, because the final decisions is vested with the hands of the military officers and General Pervez Musharraf. तो General Pervez Musharraf और military officials के हाथों में final decisions लेने का क्षमता जो कि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया था. सो इन लोगों के हाथों में तो कुछ पावर था, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लिया जाएगा, ओके, सोच लो कि एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने डिसीजन लिया कि वो क्या करेंगे, तुम्हारे एरिया में या तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल बनाया जाएगा, सेंट्रल स्कूल बनाया जाएगा, बट दैट फाइनल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. Elected representative may suggest to the General Pervez Musharraf or may suggest to the military officers, and the final decisions will be taken by the military officers or by the General Pervez Musharraf. If General Pervez Musharraf accepted that suggestion, then a school can be opened in your area. Okay. Clearly, there are many reasons why Pakistan under Musharraf should not be called a democracy. So this is not only one reason. There are several reasons are present in Pakistan through which we can say that Pakistan under the Musharraf should not be called as a democracy. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, people may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. पीपल्स जो थे मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. लोगों ने तो इलेक्टेड कर दिया, ओके, किसको, एमएलए को, एमपीज को, एमएलए को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को के लिए, और एमपीओ को जो कि नेशनल पार्लियामेंट के लिए, ओके. But those elected representatives were not really the rulers. Then who is the rulers? Rulers is the General Pervez Musharraf. The final decision making authority is the General Pervez Musharraf. They cannot take the फाइनल डिसीजन. तो उस वजह से ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कोई भी फाइनल डिसीजंस लेने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके हाथों में ये पावर नहीं था. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, ऑलरेडी ये पावर को चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट को दे दिया था. तो उसी तरह नेक्स्ट वो कह रहा है, देखो, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन इज विथ आर्मी ऑफिशियल्स एंड विथ जनरल मुशर्रफ, एंड नॉन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल. सो इन द लास्ट पॉइंट as I told you that the final decision making authority are the army officials or the general Pervez Musharraf. But both the army officials and general Pervez Musharraf is not elected by the people. So as I had already told you, our point is that first feature is that major decision in a country must be taken by the elected leaders. But here in Pakistan, General Pervez Musharraf and army officials both are not elected by the people. So that's why here we can say that that Pakistan under Pervez Musharraf cannot be called as a democratic country or cannot be called as a democracy, because the decision making authority in Pakistan was not elected by the people.
So this not happens only in Pakistan but happens in many dictatorship and monarchies. तो इस तरह का सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है, बल्कि इस तरह का सिचुएशन तुम्हें जो कि डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने के लिए मिलेगा, मोनार्की में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मोनार्क में जो राजा होते हैं, राजा भी किसी लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। ऑटोक्रेट जो होते हैं, डिक्टेटर जो होते हैं, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। तो वो अपने आप क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, अकेला डिसीजंस लेते हैं। तो उस तरह की मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए democratic government. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. So in case of Pakistan, we saw they have formally, the Pakistan of formally have an elected parliament. So वहाँ पर elected parliament भी था, elected representatives भी थे, and government, elected representative government भी था. But the real power is with those who are not elected. Real powers was enjoyed by the General Pervez Musharraf and by the military officers in Pakistan, and they are the final decision making authority. So that's why this cannot be called as a people's rule. This gives us the first feature in a democracy. The final decision making power must rest with those elected by the people. Okay, so here we saw that in Pakistan, both the Pervez Musharraf and other military officers taking all the final decision, and both are not elected by the people. That's why this kind of government or Pakistan cannot be called as a democratic government, democratic country or democratic government, where the final decisions will be taken by the elected leaders of that country. That kind of country, that government can be called as a democratic country or democratic government. Is that clear? Okay.